Hello children. In this video, I'm going to share information regarding the chapter Work, Livelihood and Career. ये chapter आपका class 12th home science का है. And when you will watch this channel, you will also find videos for the rest of the part. As in इस part के लिए part A होगा, part 1 होगा video का इस chapter के लिए, but आपको part 2, 3, 4 ऐसे करके sections में भी मिलेगा, जिससे आप chapter को easily समझ सके. After we complete the chapter, I also have certain set of questions along with answers for you. And I also have certain questions for practice also. So अगर आप मेरी videos को regularly देखेंगे, तो आपको पूरा का पूरा content easily इसमें मिल जाए. So let's get started. Work, livelihood and career. अब work क्या होता है? What is work and what is the importance of work? आप सुनते होंगे घर में हमेशा पेरेंट्स या स्कूल में टीचर्स कहते हैं कि आप काम को सीरियसली लीजिए. यू ट्राई एंड टेक each and every activity seriously and you complete it also because each activity has a purpose, and when you complete that activity you become skilled in that particular task. एक बार ही आपने लिखना सीखा, आपको टाइम लगा लिखने में, फिर आपने प्रैक्टिस करी, बार बार ही प्रैक्टिस करी, और अब आप इवन पैराग्राफ्स लिख लेते हैं, लेटर्स लिख लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लेते हैं. तो हाउ आर यू एबल टू डू इट? It only happens through practice. So what is work? Work refers to all those essential activities that are done for a purpose or out of necessity. कोई जरूरत है, मजबूरी है जिसकी वजह से आपको वो काम करना पड़ रहा है, या फिर वो उसका कोई पर्पस है. All human beings work and create their identity in the society. Of course, everybody wants that they are identified in the society by their name. वर्क को कैसे व्यू किया जाता है, कैसे देखा जाता है, और आई शुड से व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क. सो वर्क इज बेसिकली अ जॉब एंड इट मीन्स मेकिंग अ लिविंग. मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं जो आप अर्निंग के लिए कर रहे हैं. Next is a means of developing self-esteem and dignity. Of course, many a times people work because they are not confident about themselves or their decisions. तो वो काम करते हैं जिससे उनको उनमें confidence आए and they develop a feeling of self-esteem. A source of pleasure and mental satisfaction. Because work, कोई भी काम करने से आपका mind it gets occupied in that particular task, and so you find pleasure in doing that. Like मुझे अच्छा लगता है पेंटिंग करना, मुझे अच्छा लगता है एम्ब्रॉयडरी करना, so that is a kind of a work that is a source of pleasure for me, और मेरे mind को भी वो soothe करता है. A symbol of status, power and control. So work is also taken up as a symbol of status. मार्केट में आपका क्या स्टेटस है, उसके लिए उससे भी वर्क को रिलेट किया जाता है. अब वर्क तो आप डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं कि आप सोसाइटी में किस लेवल पे काम कर रहे हैं. A means of self development and self actualization. Because when you work, you get to learn a lot. Every time, now and then, changes keep happening in the society. और जब आप काम करते हैं तो आपको वो चीजों के बारे में पता चलता है, आपकी अवेयरनेस इंक्रीज होती है. A part of spiritual practice and religion and a task or duty. So it is also considered as a spiritual practice. Why? Because उसको हम pleasure और mental satisfaction के साथ में भी connect करते हैं. A source of financial benefit. Of course, काम करने के पीछे एक रीजन लिविंग है, अपनी लिविंग, अपनी अर्निंग भी है. एंड यस, ऑफ कोर्स, जब आप अर्न करते हैं आपको पैसे मिलते हैं, सो फाइनेंशियल बेनिफिट इज वन another reason behind work. An opportunity for expression of one's unique talents and creativity. As in,
these days there's so many influencers, मुझसे ज्यादा शायद आपको पता होगा, जो अपने टैलेंट को, अपने यूनिक टैलेंट को शोकेस करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को शोकेस करते हैं, एंड दैट इज हाउ हम उन्हें फॉलो करते हैं, हम उनको हर एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं. सो यस, इट इज also for an individual, it is an opportunity for expression of his or her own unique talents and creativity. Now, क्या फैक्टर्स हैं जो वर्क को अफेक्ट करते हैं? अब सोसाइटी तो इतनी बड़ी है और हर लेवल पे यू विल सी पीपल वर्किंग. So there are many factors that influence work. One is education. You must have also seen in your school or college that there are so many people working, from a grade 4 employee, or maybe a clerk, or maybe a professor, maybe a principal, or maybe a coordinator. There are different levels, और हर किसी की qualification different है. So yes, work is affected by education. Or education, the kind of education that you have, according to that you get a work. That's why, again, you must have heard, everybody in family and friends and maybe teachers saying, "Pad lo, tabhi kuch kar paoge." So education is important to work great in the society. Then is health. If your health is perfect, if you are healthy, fit and fine, if you're taking nutritious diet, then of course आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग फॉर आवर्स you will be able to work, but whatever amount of time you are spending in working, आप उसको खुशी से काम कर सकते हो. Then is age and gender. Yes, that too affects the kind of work. So if it is a coal mining kind of a task, so men are preferred in that particular task than women. So कई बारी आपका काम जो है आपकी जेंडर और आपकी एज स्पेसिफिक भी हो जाता है. Then is accessibility of opportunity. That is, there might be somebody who is not very much educated, but usko opportunity mili, usko accessibility mili to do some experimentation or to show his or her creativity. Then is globalization. Globalization एक बहुत major factor है that affects work, because with the help of this computer system or mobile phones or iPads or any other device, we are able to we get to know about what is happening around the globe. So that also affects work. आपको ideas मिलते हैं कि हाँ किस टाइप का काम किस पर्टिकुलर कंट्री में, स्टेट में, सिटी में पॉपुलर है, एंड क्या मैं वहां फिट हो सकती हूँ या हो सकता हूँ. देन इज जियोग्राफिकल कंडीशन. आप which part of the country you are staying, accordingly you would get work as well. So if you are in a metro city, you would even get better financial benefits than you when you talk about smaller cities or towns. But the advantage that you get from smaller cities and towns is that वहां पे आपका जो पर कैपिटा इनकम कम होता है, इंडिविजुअल की जो इनकम है कम होती है, बट स्टिल कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम होती है. सो वो सेव ज्यादा कर पाता है, वो अच्छी लाइफ लीड कर पाता है इन कंपैरिजन टू अ पर्सन हु इज सिटिंग इन अ मेट्रो सिटी. काफी क्वेश्चनेबल है ये डिबेटेबल है ये पर्टिकुलर टॉपिक, बट ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाते. नेक्स्ट इज फैमिली बैकग्राउंड. यस, फैमिली बैकग्राउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनकरेजिंग यू टू वर्क in a particular direction. बहुत सारे एग्जाम्पल्स कोविड टाइम में हम लोगों के सामने आए जहाँ पे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. फार्मर्स हैं, उन्होंने अपनी फार्म लैंड सेल ऑफ किया, एंड दे डिड एजुकेट देयर चिल्ड्रन टू स्टडी इन सिटीज. बट क्या हुआ, उन बच्चों की जॉब्स वहां पे छूट गई, एंड देन they came back to the farm, their farms, they started working over there, but because un qualified थे, educated थे वो लोग, they were able to apply those techniques in their farmlands, और उन्होंने उससे अपने फार्म की yield production को बढ़ा दिया. So that is, you can interrelate these factors as well. Now, what is a meaningful work? मीनिंगफुल वर्क क्या है? जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको रिसेंटली दिया अबाउट एन एजुकेटेड पर्सन गेटिंग बैक टू हिज रूट्स, और वहां पर वो सपोर्ट कर रहा है. और मे बी
people like us who are doing a particular job that is good for the society. Like maybe अपने कॉलोनी में सोसाइटी में अपनी रेजिडेंशियल सोसाइटी में आप एक compost bin बनाएं and you encourage people that whatever fruit and vegetable waste you have, you put it in that. And this particular compost can be used as a fertilizer for the plants that we have in our park or garden. So, क्या है meaningful work? क्या है work which is useful to society or to others, and it is done responsibility and is enjoyable to the worker. It contributes to personal growth, instills confidence and self-worth, and may eventually lead to actualization of full potential. So, what does meaningful work mean? Meaningful work is not just going to help the society or others, but ये आपकी अपनी personal growth में भी help करेगा. It will lead to confidence. It will instill confidence in you, and आपको अपनी worth पता चलेगी that yes, I am capable of doing so many things. It provides opportunities to contribute to the improvement of one's own life conditions and that of society. अब वो क्या कर सकता है, वो ना सिर्फ अपना लाइफ को improve कर सकता है, but it can also improve the society as a whole. Now we have work, livelihood and career. इनके differences हैं, and ये question भी आ सकता है, that is they can ask you just the definition of work or livelihood or career, or they can ask you to differentiate in between two of them or all three of them. So that's why मैंने इसको एक table form में place किया है, so that you can learn it in this particular manner, and then points up अपने convenience के accordingly लिख सकते. So work is a set of activities with an intended set of outcomes, which includes employment and entrepreneurship, consulting, volunteerism, contract, social work for community welfare, and other professional work. So work is something जिसका एक outcome आपको, एक result आपको नजर आए. That is work. Livelihood क्या है? Livelihood है कोई job, कोई occupation या कोई other means of work जिससे आपको money मिले. That is livelihood. Or it meets the basic needs of a person and his family. मतलब एक particular family की जो needs है, basic needs, रोटी कपड़ा मकान, that kind of basic needs वो उसकी fulfill करे. Next is a career. Career denotes the means and occupation by which an individual fulfills his basic needs. So means क्या हो सकते हैं? आपने तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे भी होंगे, जैसे एमबीए चाय वाला, राइट? ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा दैट यस अ पर्सन वाज सो वेरी क्वालिफाइड एंड देन उसने कोई जॉब नहीं किया, बट उसने अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, राइट? स्टार्टअप्स, देयर सो मेनी स्टार्टअप्स दैट आर कमिंग अप, एंड there are many startups that have already you know doing so well in our country. So career क्या है? जो आपको कोई जॉब प्रोवाइड करे या उसका एक पाथ डिफाइन करे, दैट इज करियर. और वो आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में भी हेल्प करे. टू अचीव सक्सेस इन करियर, अ पर्सन कॉन्स्टेंटली लर्न्स न्यू स्किल्स, obtains new information and is always ready to prove himself in his chosen field. So वो अपने करियर को constantly improvise करने के लिए he or she would always keep on working to such that उसको फ्यूचर में अच्छे prospects मिले, अच्छी earning मिले, and he is able to grow also. Career is a life management concept in which development continues throughout life. So career जो है आपका helps in managing your life. That is, it helps you earn, it helps you grow, and it helps you develop yourself throughout your life. Now, what are the difference between career and livelihood? Career is equal to livelihood, which is basically a job. Plus, अब इसके अलावा और क्या जो होता है career? It is the desire to prove yourself in your field. मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप कमा तो रहे हैं, वो आपका लाइवलीहुड है, बट what you want from that particular job more, right? So you
want to prove yourself in your field. Yes, I am good. मैंने ये particular career choose किया है, तो I am doing good in this particular field. Enjoyment in job, that is very important. जो हर किसी को नहीं मिलती, enjoyment तब मिलती है जब आप उस particular task को completely, you know, free mind से work कर रहे हो. Efforts to improve life. Now, with career, yes, you're putting in more of efforts such that your life gets improved. Enthusiastic to learn new skills and gain new information. That you are always, enthusiastic that yes, मुझे नई चीजें सीखनी है, मुझे नए skills सीखने हैं, जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा information मिले और वो मेरे career में मुझे help करे. Next is perspectives of work done for earning money. अब work as a job and livelihood. अब work क्या है, क्या लेके चला? Yes, it is a job. And two, it is a means of livelihood, that is earning. So job satisfaction is gained by the money earned. Most of the times, people consider that yes, one feels satisfied when one is earning good. Next is work as a career. Achievement of position and advancement in job satisfies a person. When you do good in your job, it gives you satisfaction. This is another kind of perspective. Next is work done for one's satisfaction. Completion of work itself satisfies a work. So when you complete a particular project or a task, you feel satisfied, and that leads to satisfaction of person through completion of his work. काम complete कर लिया, that is another perspective of work done for earning money. अब कुछ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं हमारी कंट्री में, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, वीविंग, एम्ब्रॉयडरी, इंडियन क्यूजीन्स, विजुअल आर्ट्स, और कुछ और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे गार्लैंड या ऑर्नामेंट मेकिंग. गार्लैंड क्या होता है? फूलों की माला बनाना. Ornaments banana, working as a priest, that is a traditional occupation, salt making, mining, brick and tile making, hunting, and trapping birds and animals. ये सारे traditional occupations हैं हमारी country के. Let us now discuss them one by one. So first one is agriculture. Almost 70% of Indian population live in rural areas and is dependent on farming for livelihood. In most parts of the country, some farmers produce cash crops for sale in urban markets. Cash crops क्या होते हैं? जो crops उनको ज़्यादा money देते हैं, जो ज़्यादा price में sell होते हैं. Examples क्या हैं? Tea, coffee, cardamom, rubber. ये कुछ examples हैं cash crops. Now, India is the largest producer of cashew nuts. Cashew nuts is kaju, coconut, milk, ginger, turmeric, and black pepper in the world. So ये products हम even export करते हैं अपनी country से दूसरी countries में sell करते हैं. और जब आप अपनी country से दूसरी country में products sell करते हो, that means exports of products, that means exchange of currency, and that means benefit for your country. Next is fishing. Fishing has been another important traditional occupation of India because of the country's very long coastline. अगर आपने इंडिया का मैप पे इंडिया को देखा है, तो आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया का जो है, आई शुड से 2/3 पार्ट जो है इंडिया का, वो वाटर के अराउंड आ जाता है. तो कोस्टलाइन बहुत बड़ा है इंडिया का, एंड दैट्स व्हाई फिशिंग इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन. नेक्स्ट इज हैंडीक्राफ्ट्स. How can we forget about handicrafts and embroideries? ये भी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है इंडिया का, एंड अभी भी बहुत सिटीज में, बहुत स्मॉलर टाउन्स में, विलेजेस में ये अभी भी फॉलो किया जाता है. हैंडीक्राफ्ट्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, एंड ये हैंडीक्राफ्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट भी होते हैं. Many Indian arts and crafts are very popular in the international market. Some examples are Shola craft of Odisha, Channapatnam dolls of Karnataka, Worli painting of Maharashtra, puppetry craft of Rajasthan, coconut craft of Kerala, and bamboo craft of Assam.
एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ सकता है कि शोला क्राफ्ट कहाँ की है, सो दैट्स उड़ीसा, या फिर दे कैन आस्क द अदर वे अराउंड दैट व्हिच इज द फेमस हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट ऑफ उड़ीसा और कर्नाटका और महाराष्ट्र एंड लाइकवाइज। सो आपको इसको लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चंस में ये मोस्टली आता है। नेक्स्ट इज वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी। Yeah, again is rich in weaving and embroidery work. You go to Banaras, you go to South of India, you go to East of India, you go to West of India, हर जोन में आपको ये इंडिया के वीविंग प्रोसेसेस दिखेंगे। सो और वो भी हैंडलूम्स में लार्जली। पावरलूम्स अलग होते हैं, हैंडलूम मतलब हाथ पे वो लोग वीव कर रहे हैं, साड़ीज बना रहे हैं, दुपट्टास बना रहे हैं, they are weaving carpets, they are weaving shawls. So बहुत सारे products all over India बनते हैं, अलग अलग तरह के बनते हैं, and they're very famous। और ये products इंडिया से again ये भी export होते हैं बहुत। India is famous for different types of weaving. Weaving is an important cottage industry of India. Cottage industry मतलब एक small industry जहाँ पे कोई भी अपने घर में थोड़ी सी जगह में उसको कर सकता है। Each state has its own typical fabrics, embroidery stitches, and costumes which are suitable for the region's specific climate and lifestyle. इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे पश्मीना शॉल्स होते हैं, तो वो आपका जम्मू कश्मीर एरिया में बनती है बिकॉज दैट इज द क्लाइमेट दैट इज सूटेड टू डेवलप दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वन एंड टू, वहाँ पे जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, उनको ये क्राफ्ट बहुत अच्छे से आती है। So that is another reason why ये particular region specific भी हो जाता है। Next is Indian cuisine. Indian cuisine again, it's famous all around the globe. So Indian cuisine has emerged as a source of livelihood for innumerable persons, ranging from street food vendors to specialty restaurants and theme pavilions in five-star hotels. Many traditional foods and spice mixes and masalas are in demand in other countries. Not just India, UAE में भी बहुत सारे spices वगैरह वहाँ पे भी बनते हैं, and they are also famous all around the globe. So yes, spices is another thing for which India is famous. Next is visual art. Visual art मतलब जो artisans जो चीजें बनाते हैं, वो visual art में आ जाती है, and you would be able to see that in temples, in church, in gurdwaras. You would see these pieces of architecture all around the country. So in India, artists and artisans were supported by large Hindu temples and the rulers of various states. In different places of worship of great variety, if regional styles of architecture can be seen, such as images skillfully carved in stone or cast in bronze or silver or in terracotta or wood or colorfully painted. So you would find really very interesting architectures. आप कोई भी फोर्ट में जाके देखिए, you would see that yes, कैसे उन्होंने एक पूरी रॉक को कार्व करके उन्होंने एक टेम्पल बना दिया उसके अंदर। सो visual art is another art that is famous in our country. Now there are more traditional occupations like garland or ornament making, working as a priest, salt making, mining, brick and tile making, hunting and trapping birds and animals. They're all traditional occupations of our country. अब हमेशा से तो ये टॉप लेवल पे नहीं रहते ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। टाइम कम्स व्हेन these occupations they start falling down, as in लोग इनको लोग डिस्करेज करते हैं, अपने फैमिलीज डिस्करेज करती हैं अपने बच्चों को that they should do these particular things, and सबसे बड़ा रीजन उसके behind है illiteracy, that they feel that yes हमारे घर में हम अगर बच्चे भी यही काम करेंगे तो फिर then they'll not be able to earn good. But somewhere अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है आजकल बहुत डिमांड में है। So there now with children getting educated,
Those children now are learning कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, कैसे हम और अपनी रीचेबिलिटी बेटर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की. तो डाउनफॉल का रीजन है इलिटरेसी, बट वो लोग अच्छा कर पा रहे हैं जो थोड़ा सा एजुकेटेड हैं, वो उसको और बेटर प्लेस कर पाए. इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यस, उनके पास में पैसा नहीं है एंड दे फील कि हम और ज्यादा नहीं अर्न कर पा रहे, तो हमारे बच्चे तो एटलीस्ट अच्छा अर्न करें. सो दैट इज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बिकॉज ऑफ विच you see a downfall in these traditional occupations. Inadequate and inefficient finance and marketing services. अगेन जैसे मैंने आपको इलिटरेसी में एग्जांपल दिया, वो चीज हर एक केस में फॉलो हो रही है. दैट इज अगर बच्चे थोड़े उनके पढ़ लिख रहे हैं, दे आर एबल टू अप्लाई दोज टेक्निक्स कि कैसे हमें फाइनेंसेस कहाँ से मिलेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट सपोर्ट्स दीज इंडिविजुअल्स. वो आर्टिसंस क्राफ्टमैन को सपोर्ट करती है, बट इन्हें पता ही नहीं है कि कैसे सपोर्ट चाहिए, कहाँ से मिलनी चाहिए. सो यस, इफ दे आर लिटिल एजुकेटेड तो उनको ये सपोर्ट इजीली मिल जाती है. वो बैंक्स को अप्रोच कर पाते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रीड कर पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं. एंड यस, मार्केटिंग सर्विसेज कि कौन से प्लेटफॉर्म को फॉलो करना है, किसकी सपोर्ट लेनी है, ये सब भी उन्हें पता चलता है. Then is depletion of forest-based resources. Yes, that is another major reason. तो अगर you talk about, I can give you an example कि मैं आगरा गई और मैंने वहां पे देखा था कि एलिफेंट टस्क से उन्होंने ताजमहल कार्व करके बनाया था. It's not allowed. Killing of animals is not allowed now. So that is another resource जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर चीज में नहीं कर पा रहे. But yes, they can do it in marble, they can do it in wood, they can do it in other materials as well. So खत्म नहीं हुआ है वो क्राफ्ट. नाउ दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट surfaces. Slow progress in implementing land reforms. Yes, that is another big problem, that the changes that are happening now and then, because they're not educated, they're not able to follow it easily and comfortably. Then is environmental degradation. Yes, बहुत सारी crafts हैं जिन पे कई बारी बैन भी लगा दिया जाता है, that yes, they are not good for the environment. So yes, that is another reason for downfall of traditional occupations. Now, what is important? We need to improve these, revive these particular traditional occupations. कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले, that you need to educate those people. So to sustain our indigenous knowledge and skills, what we need to do, we need to skill these people more. Then why we need to do this? For foreign currency and income generation, because now we have learned that these products are not just uh, in demand in our country, but for दूसरी countries में भी बहुत demand में है. To enhance employment potential of the rural folk. Now, once they are given a path, that yes, ऐसे आपने प्रोडक्ट बनाना है, ये आके आपसे प्रोडक्ट पिक करेगा, ये पर्टिकुलर पर्सन मार्केटिंग करेगा, जब वो प्रोडक्ट सेल होगा तो आपको इतने पैसे मिलेंगे. सो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल जब उनको पता चलता है, रूरल इंडिविजुअल्स को, आर्टिसंस को, देन yes, they will be able to continue with the craft. To conserve the variety in our traditional cultural heritage, it's very important that we conserve this variety, because ये बहुत डिप्लीट, बहुत जो है आर्टिसंस हमारे, बहुत क्राफ्ट्स जो है ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट जो अभी हैं उन्हें हम कंजर्व करके चले. Ways for improvement in these occupations. One is establishment of training facilities. Government ने बहुत skill centers और training facilities बनाई हैं जो इन लोगों को particular task में skill up करने में help करती है, upskilling में help करती है. Design innovations, as in वो जो product बना रहे हैं उसमें और further वो कैसे different designs को अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देन इज यूज ऑफ इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल. सो एनवायरमेंट फ्रेंडली, दैट्स व्हाई आई सेड कि पहले वो एलिफेंट टस्क से लार्जली बनता था, बट अब वो वुड या मार्बल से भी बना रहे हैं. सो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हैं, जिससे कि वी आर नॉट फोर्सिंग पोचर्स टू किल एनिमल्स. देन इज प्रिजर्वेशन एंड रिफाइनमेंट
strategies. कैसे आप उस particular technique preserve कर सकते हो, उसको कैसे improvise कर सकते हो. New packaging is the key to success, I would say. Today, in today's time, you would see कि the millennials, the Gen Z, they basically look for packaging of the. अगर पैकेजिंग बहुत अच्छी है आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं टू बाय द प्रोडक्ट एंड वंस दे बाय आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि उनको वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा ही लगेगा बिकॉज वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन ने बनाया है. देन इज प्रोडक्ट देन इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. नाउ again अगर उन्होंने कुछ भी create किया है so then yes they should be identified. So government is even taking steps in this. They are they identify the work of a particular artisan and they also encourage them to develop more and more and more of products. So I hope ये particular section आपको समझ में आया होगा. Part 2 भी इसका मैं जल्दी ही place करूंगी channel पे. In case you like this particular video, please do not forget to strike a like button and also subscribe to the channel because आपके subject related बहुत सारी information अब यहाँ पे channel पे आपको मिलने वाली है. Thanks for watching.